दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा मौसम है। नाइस टाइम टू टॉक टू यू। और मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने वाला हूँ, समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच विल एक्साइट ऑल ऑफ यू। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द अटेम्प्ट टू किल मिस्टर गुरबंश सिंह पन्नू। नाउ हु इज़ दिस मैन पन्नू, वो भी मैं आपको बताऊंगा, एंड व्हाट इज़ द बैकग्राउंड बिहाइंड इट। पर मैं ये एक बात बता देता हूँ कि ये मेरे पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई एम नीदर ए मेंबर ऑफ द अमेरिकन इंटेलिजेंस नॉर द इंडियन इंटेलिजेंस। पर मैं ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ विद माई ओन नॉलेज और मेरी एक डिडक्शन करके। आप जानते हो कि सर आर्थर कॉनन डॉयल हैड क्रिएटेड वेरी फेमस डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स। और शेरलॉक होम्स जो था, ही यूज्ड टू सॉल्व ऑल द क्राइम्स बाय ए मेथड ऑफ डिडक्शन। तो आप समझिए कि एक तरीके से शर्लॉक होम्स की तरह मैंने ये डिडक्शन किए हैं, एंड आई होप आई एम क्लोजर टू द ट्रूथ। बट अगेन, आई वॉज नेवर ए मेंबर ऑफ द इंडियन इंटेलिजेंस और द अमेरिकन इंटेलिजेंस, बट यू मस्ट लिसन टू व्हाट आई हैव टू से। नाउ द न्यूज़ क्या है सामने? न्यूज़ ये है कि एक निखिल गुप्ता नाम के आदमी हैं, who was a drug smuggler who had many cases filed against him in Gujarat, who had run away from Gujarat. And he was reportedly contacted by some Indian official from RAW or from anywhere else, we don't know, and offered $100,000 to eliminate Mr. Pannu. पहली बात तो मैं ये बात कहूँगा कि मिस्टर पन्नू जो हैं, इज़ ए वेरी अनइम्पॉर्टेंट मैन। ही इज़ नॉट ए टेररिस्ट इन द क्लास ऑफ से ओस्मा बिन लाडन या और जो लीडर हैं अली जावरी और ये वो। ही इज़ ए स्मॉल टाइम फिश। और उसने कोई टेररिस्ट अटैक अभी तक किया नहीं है। इन द सेंस ही हैज़ नॉट थ्रोन एनी बॉम्ब, ही हैज़ जस्ट नॉट डन एनीथिंग फिजिकल, ही हैज़ बीन हर्लिंग सम थ्रेट्स हियर एंड देयर। Threats per se are bad and need to be punished, but there is no terrorist act against him, though he has been declared as a terrorist because he is part of the Six for Justice movement. और ये काफ़ी क्वालिफाइड आदमी भी है। लेट मी टेल यू, ही हैज़ डन इन LLB किया है उसने पंजाब से। आफ्टर दैट ही डिड इज MBA, फिर ही डिड इज मास्टर इन लॉ फ्रॉम न्यूयॉर्क, एंड ये फिर अमेरिका का और कनाडा का ड्यूअल सिटीजनशिप है इसके। सो जो खबर हमें पास आ रही है फ्रॉम द अमेरिकन सोर्सेज कि देर वॉज एन अटेम्प्ट टू किल हिम, बट इट वॉज स्टॉप बाय द अमेरिकन CIA, बिकॉज ये जो निखिल गुप्ता आदमी है, इन्होंने एक किसी को कॉन्टेक्ट किया हु वाज सपोज टू बी हिटमैन, एंड दैट हिटमैन सपोज टर्न्ड आउट टू बी ए डबल एजेंट, इन द सेंस ही वॉज एजेंट ऑफ द CIA ऑल्सो, एंड उसने इंफॉर्मेशन उनको दे दी, एंड nothing happened to Pannu. And this Nikhil Gupta, I believe he told that agent कि हमने निज्जर को भी साइड में रखा है, सो निज्जर was killed. अब ये देखिए, 2 and 2 doesn't add up to 4 so simply. पहली बात तो मैंने आपको बताया, पन्नू जो था अनइम्पॉर्टेंट फिगर, और उसको मारने से इंडियन गवर्नमेंट गोइंग टू गेट नथिंग। उसकी कोई मास फॉलोइंग नहीं थी कि पंजाब में हज़ारों आदमी उसके फॉलोअर थे एंड ऑल दैट। एटलीस्ट अमृतपाल सिंह जिसको अरेस्ट किया पंजाब में, ही हैड सम फॉलोइंग एंड ही वॉज डूइंग सम एक्ट्स विच आर एंटी स्टेट। पर इस आदमी ने अभी पंजाब में तो कुछ नहीं किया। इस प्रॉपर्टी सीज इन एनी केस बाय द NIA कोर्ट। तो अभी क्वेश्चन ये है कि क्रेडिबिलिटी क्या है ऑन द अमेरिकन क्लेम। द अमेरिकन क्लेम इज दैट दिस मैन कॉल्ड निखिल गुप्ता, इसने वो एजेंट को कॉन्टेक्ट किया हु टर्न्ड आउट टू बी अमेरिकन डबल एजेंट, एंड दैट मैन स्पिल्ड द बीन्स। और मुझे खबर ये है कि जो ये निखिल गुप्ता है, ये ज़ेकोस्लोवाकिया में थे और ये वहाँ से अरेस्ट हो चुके हैं। ही बीन अरेस्टेड। अब क्वेश्चन ये राइज था कि ये आदमी वहाँ क्या कर रहा था ज़ेकोस्लोवाकिया में। प्रॉबेबली थॉट मैं वहाँ सेफ रहूँगा, बट ही डिड नॉट नो दैट देयर इज एन एक्सट्रेडिशन ट्रीटी बिटवीन ज़ेकोस्लोवाकिया एंड अमेरिका, और ही विल बी एक्सट्रेडिटेड फ्रॉम देयर। ये प्लॉट थोड़ा मर्की इस कारण हो जाता है क्योंकि अमेरिकन हैव फाइल्ड एन इंडाइटमेंट in a New York court against Gupta. Or Gupta has probably given some information also कि he says he was contacted by some agent from
the Central Intelligence Agencies of India, who offered him this much of money and also told him कि don't worry, आपके जो गुजरात के केस हैं हम वाइप आउट कर देंगे. I don't know whether anybody can have that sort of authority कि जो कोर्ट केसेस जो फाइल हुए हैं उनको आप वाइप आउट कर सकते हैं या नहीं. See, the American narrative looks truthful, but it need not be truthful. America is known as a country which has carried out or engineered hundreds of killings abroad, and they have carried out hundreds of coup d'etats all over the world. They even tracked down Che Guevara and got him killed. Then they had Allende killed, the president of Chile. And then in 1954, if you remember, the Shah Farhan jo tha, he was put back into power in Iran by a palace coup by the CIA. The Russian intelligence bhi kam nahi hai. They have gone and killed so many people here and there. But we are not concerned about that, whether the American intelligence did anything or didn't do. We are concerned about what happened to Pannu. अच्छा, now मेरी राय ये है कि this is a very far-fetched narrative, पर इसको prove करना is going to be pretty difficult unless you see Nikhil Gupta, he gives some relevant information which can be verified. That is very important. Information जो भी दे रहे हैं is okay, but it has to be verified. So gentlemen, मेरे हिसाब से ये entire case जो हो सकता है is a comedy of errors. That is also a possibility. And किसी तरीके से these people have to get their back on India. See, the whole crux of the issue is that Narendra Modi is one man with the Americans don't want him to continue, though on the face of it they are saying and back slapping him and saying we are friends. But in their heart of heart they would be glad to be rid of this man, and someone say more pliable like Mr. Gandhi or somebody comes in power who keeps on saying, "Gee, sir, yes, sir," 3 bags full to the Americans. And that is what they're looking forward to. But we have to wait and see what happens further. The question which really bugs me is that how all this evidence has come out after so many months. Now the Americans, I believe that's what they say, that they had kept it under wraps till this indictment is done, and now that has been done in the court, the matter is out in the open. They have not named the official who was carrying out all this activity with Mr. Gupta, but probably he could be someone from the Indian Police Service who has been seconded to the research and analysis wing. There's so many people who from the police and the CRPF and other people, BSF, they go into this and then they become central officers and they do that. And this man also, itni badi decision ki $100,000 dena hai, he could not have taken it on his own unless it is approved by the highest authority. So gentlemen, ये बहुत सी pros and cons है. Indian government ने तो कोई reaction दिया नहीं, except they have said कि जो भी American claim है, we are going to investigate it. I mean, you can't expect anything more than that. But in case this is true, then it is a big failure of the Indian intelligence. Because when you do such things, such assassination attempts, you cannot take even 0.01% chance of failure. Either it is successful or it is not done. So this Nikhil Gupta, whatever it is, he got fooled by the double agent, is itself a flaw in the working of the Indian intelligence. In case it has done. But there is, as I was told you, also a chance that the whole thing could have been concocted. But then to concoct all this also does not appear really relevant or it is true. So gentlemen, the case, all I can say is very murky. मैंने आपको खबर दे दी है. This is what is happening really. America has arrested got one man arrested in Czechoslovakia. उसको extradite करेंगे. They will try him. And in case he is found guilty, sentenced to at least up to 20 years in jail. It's a very big offense for trying to getting out an assassination on American soil. Then the second thing which we must remember is that India is no longer the same country as it used to be during the time of Pandit Nehru, Gandhi and all those characters, And India has a violent reaction so many times. And there could be a change of thinking after the new government has taken over in 2014.
But gentlemen, everything is not so honky-dory or so easy that you can, say, okay, yes, 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 we'll do it. Fact is, geopolitical forces are working. America wants India as an ally against China. That is the crux of the issue. And they would put any amount of pressure on India, try and get India online. I have a feeling even those 9 Indian officers who have been arrested in Qatar are perhaps part of the same scheme of things. Well, gentlemen, that's all I can say at the moment. And I have just given you the report. I've given you my assessment. It could be a fake also, a concocted story, and there could be some truth also. But then, really, in case it is true, it would be a disaster for the Indian intelligence to have indulged in an act which they could not bring to completion. I will close now, gentlemen. Say goodbye. God bless. Do like my channel. Share it with your friends and come back for more. Bye bye and God bless.